Good morning, students. Hope you are fine. Yesterday we have read about final goods and intermediate goods. The difference between them was that intermediate goods are used as raw material and used for resale in the same year, but final goods are ready to use either by consumers or by producers. They have crossed all the processes of production, they have crossed all the lines of production and now they are ready to use. So, what is the relevance of intermediate goods and final goods in national income? It is that we have to count only value of final goods when calculating national income, and we should not count the value of intermediate goods. Why so? Because when we count intermediate goods, because they are used as raw material, so there will be double counting of all the goods. For example, to produce cotton textile, 3 or 4 raw materials, 3 or 4 inputs are used. If we take final value of textile, it includes all the cost, all the expenditure of all the inputs. But if we count the cost of all inputs separately, then they will be counted again and again because these costs are included in final good also. So, there is the problem of double counting. So, when we calculate national income, we have to count the value of only final goods and not of intermediate goods. Now, we will tell the difference between consumer goods and capital goods. So, goods can be differentiated on the behalf of their use also. Either they are used by consumers or they are used by producers. So, what are consumption goods? The goods which satisfy the wants of consumers directly, they are consumption goods or consumer goods. All the goods which we use in our daily life from early morning till late night, so many goods we are consuming. Some are short lived, some are durable goods. Goods can be differentiated as their life also. कई goods की बहुत long life होती है, like furniture, fan, AC. They are used repeatedly again and again, but some are short lived like perishable goods, vegetables, fruits, clothes, semi durable, क्योंकि एक सीजन के बाद clothes भी out of use हो जाते हैं. So, consumer goods can be classified into durable and non durable and perishable also. And what are capital goods? Capital goods are those goods which are repeatedly used in the process of production by the producers for several years. बहुत लंबे समय तक हम उन्हें capital goods को use कर सकते हैं. For example, tools, implements, machinery, plants, tractor, building, computers, transformers. These all implements are used again and again repeatedly for a long time and for production purpose. So, these are categorized as capital goods. Producer goods and capital goods, these two terms are also confused because capital goods are used by producers and they are used for long time, but producer uses some other goods also which don't have long life, like raw materials. These are single use producer goods and these get merged in the process of production. We can't use them again. Once they are used in process of production, we can't use them again. They are merged in the process of production. And some are durable goods like plant and machinery. So, all capital goods are producer goods, but all producer goods are not capital goods. Now, we will learn about economic territory of a country. When we have read about different definitions of national income, one term is used there
and that is domestic territory और economic territory of a country, कि जो नेशनल इनकम है वो किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू है। तो इन डेफिनेशंस में अलग अलग टर्म्स यूज़ की गई हैं, लाइक नॉर्मल रेजिडेंट्स, लाइक domestic territory or economic territory. So we have to understand all these terms in detail. So what is economic territory or what is domestic territory? We can define in the words of United Nations, economic territory is the geographical territory administered by a government within which persons, goods and capitals circulate freely. What does it mean? कि किसी भी कंट्री की जोग्राफिकल टेरिटरी, जोग्राफिकल मीन्स जहाँ तक उसका जोग्राफिकल एरिया है, जहाँ तक उसकी मैप में बाउंड्री है, वो पूरा एरिया किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी है। उस इकोनॉमिक टेरिटरी में उस पर्टिकुलर कंट्री के पर्सन, गुड्स और कैपिटल्स फ्रीली सर्कुलेट करते हैं, विदाउट एनी बाउंडेशन सर्कुलेट करते हैं, क्योंकि उनके अपने कंट्री की लिमिट्स हैं, जोग्राफिकल लिमिट्स हैं। तो वो पूरा एरिया हमारे किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक या डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाता है। क्लियरली, फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल is the basic criteria of economic territory for including any item in it. So those parts of political frontiers of a country where government does not enjoy these freedoms are deemed to be outside the economic territory. For examples, embassies of other countries located in India are not included in domestic territory of India, क्योंकि जो एम्बेसी है किसी भी कंट्री की इंडिया में लोकेटेड है, लेकिन वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, क्योंकि जिस भी कंट्री की एम्बेसी है उसको उसी कंट्री के लोग गवर्न कर रहे हैं, उसी कंट्री के लोग ऑपरेट कर रहे हैं, उसी कंट्री के लोगों के द्वारा वो रूल्ड आउट की जा रही है, वो उनको ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें उनके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। सो दैट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इन द सेम वे, if Indian embassy is located outside in some other country, then that is not domestic territory of that particular country. So जो हमारी एम्बेसीज़ हैं वो जिस भी कंट्री की होंगी वो उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगी। So this is a criteria of being a economic territory of or domestic territory. So now I am telling you What does domestic territory include? कि किसी भी कंट्री की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। फर्स्ट, टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स या जोग्राफिकल जो भी बाउंड्री है उसके अंदर जो उसका टेरिटोरियल वाटर है, एयर स्पेस है, वो सभी इंक्लूड होता है। वाटर जो भी हमारी जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जितने भी रिवर्स, स्ट्रीम्स, जो भी वाटर बॉडीज़ हैं वो सब आएंगी। एयर स्पेस, ऊपर जितना भी एयर स्पेस का एरिया है जिसमें हमारे एयरक्राफ्ट्स ऑपरेट करते हैं, वो पूरा एरिया हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। सेकंड, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स बिटवीन 2 or more countries. For instance, Indian ships moving between UK and Pakistan regularly, or passenger planes operated by Air India between Russia and Japan are parts of domestic territory of India. इंडिया के प्लेन्स हैं लेकिन वो सर्विस दे रहे हैं किसी और 2 कंट्रीज़ के बीच में। प्लेन्स हमारे हैं, इंडियंस उनको ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन वो सर्विसेज अपनी दे रहे हैं लाइक यूके और पाकिस्तान के बीच में। तो वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे। बेशक दे आर ऑफरिंग देयर सर्विसेज बिटवीन 2 other countries. इन द सेम वे, अकॉर्डिंग टू इंडियन शिप्स हों या एयरक्राफ्ट्स हों, लेकिन अगर उनको इंडियन लोग ऑपरेट कर रहे हैं तो दे आर द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स
operated by the residents of a country in the international waters or engaged in extraction in areas where the country has exclusive rights of operation. फिशिंग वेसल्स शिप्स हैं, बोट्स हैं जिनके द्वारा फिशिंग की जाती है, ऑयल और नेचुरल गैस से रिलेटेड जो भी एरिया है जहाँ पर उनका एक्सट्रैक्शन हो रहा है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स जो इंटरनेशनल वाटर बॉडीज़ होती हैं, ओशंस हैं, इंटरनेशनल हैं क्योंकि उनकी जो बाउंड्रीज़ हैं बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ लगती हैं, खाली इंडिया के साथ तो नहीं लगती है। तो उसमें जो भी जिस कंट्री के पास उनको ऑपरेट करने का एक्सक्लूसिव राइट होगा, उसमें चलने वाले शिप्स, बोट्स को चलाने का अधिकार जिनके पास होगा वो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे। नेक्स्ट, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ द कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। जो भी एम्बेसीज़ हैं, एम्बेसीज़ हमारे किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल बहुत बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं, पॉलिटिकल ऑफिसेज होते हैं। एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स जो हैं ये भी पॉलिटिकल ऑफिसेज हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी कंट्री अपनी मिलिट्री, अपनी आर्मी किसी दूसरे कंट्री में एस्टेब्लिश करता है, वो खुद ऑपरेट कर रहा है उस चीज़ को, इसलिए जिस भी कंट्री के ये एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हैं, चाहे हमारी एम्बेसी किसी भी कंट्री में लोकेटेड हो, क्योंकि उसको ऑपरेट हम कर रहे हैं। हमारा एम्बेसडर वहाँ पर लोकेटेड है, हमारा एम्बेसडर वहाँ पर अपॉइंटेड है जो काम कर रहा है। हिंदी में एम्बेसी को बोलते हैं दूतावास, और एम्बेसडर जो भी उसमें अपॉइंटेड होता है वो हमारे कंट्री का बंदा होता है और उसको बोलते हैं एम्बेसडर, राजदूत। एम्बेसी क्यों दूसरे कंट्रीज़ में इस्टेब्लिश की जाती हैं? ताकि कोई भी अगर पॉलिटिकल इशू है किसी भी कंट्री के साथ तो हम उस पर्टिकुलर पहले एम्बेसी में वो जाकर डिस्कस करते हैं, उससे रिलेटेड अपने पॉलिटिकल इश्यूज़ को सॉल्व करते हैं। तो जो भी किसी भी कंट्री की एम्बेसी दूसरे कंट्री में लोकेटेड है तो जो भी कंट्री उसको ऑपरेट कर रहा है उसी कंट्री की वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, चाहे वो किसी भी कंट्री में लोकेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन एम्बेसी इन रशिया, America and other countries will form parts of domestic territory of India because Indian laws are applicable in Indian embassies. Similarly, embassies of other countries like Japan, Russia, America located in India are parts of domestic territories of their respective countries and not of India. So again, what does domestic territory does not include? First, territorial enclaves like embassies, military establishments of foreign countries and international organizations। बहुत सारे international organizations होते हैं like UNO, WHO। तो इनके ऑफिसेज जिस भी कंट्री में होंगे उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का वो पार्ट नहीं है, दे आर कॉल्ड पार्ट ऑफ इंटरनेशनल टेरिटरी। वो उस पर्टिकुलर कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होंगे जिस भी कंट्री में उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस होगा, बल्कि वो जो दे आर कॉल्ड पार्ट ऑफ इंटरनेशनल टेरिटरी। So students, do revise daily whatever is taught, only then you will be able to understand.